Hello, dear friends. I, Pleader Javed Ali Salro, again in front of you to share the essential knowledge from the Constitution of Pakistan 1973. Because always, every time, whenever I am in front of you, I always tell you so that whatever written in the textbook of the Constitution of Pakistan, I only provide the thing which is, of course, totally essential. तो आ जाते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करने के हवाले से. एज यू नो दैट आई हैव रीडेड इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर द थिंग एंड एक्सप्लेन द थिंग विच इज टोटली इसेंशियल विच वाज आल्सो प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. अभी आपको मैं अपना रिकॉल कराने के हवाले से थोड़ा अपना बताता चलूँ कि हमने जो अपना पार्ट 6 था, पार्ट 6 पे इस वक्त हम वाक़े हैं, मौजूद हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं. तो पार्ट 6 में हमने जो पढ़ा था, पार्ट 6 का जो टाइटल था फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स. तो ये पार्ट 6 है. पार्ट 6 में हमने पहले जो है अपना स्टार्ट लिया था फाइनेंस से, जिसमें अपना क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस. ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया था. टॉपिक था जो कि अपना पार्ट 6 का, जो कि आर्टिकल थे जिसमें मौजूद थे 160 टू 163. ये हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया. अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट एक टॉपिक की तरफ जो कि पार्ट 6 में अवेलेबल है, प्रेजेंट है. उसको अपना रीड आउट करते हैं. चलो, लेट्स मूव and let's enjoy and let's get a knowledge, the essential knowledge of the Constitution of Pakistan 1973. Let's come. Now here's another topic, miscellaneous फाइनेंशियल प्रोविजंस. मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, जैसे कि हमने फाइनेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा. तो अभी मिसलेनियस जो है फाइनेंस प्रोविजंस है, उसके बारे में हम चलो अपना पढ़ लेते हैं आज. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एसेंशियल विच इज आल्सो वर्ड बाय वर्ड नॉलेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि अपना टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में अवेलेबल है, प्रेजेंट है. सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस. 164 article of Constitution of Pakistan 1973. Grants out of consolidated fund. Definition: the federation or a province may make grants for any purpose, notwithstanding the purpose is not one with respect to which Majlis-e-Shura, Parliament, or as the case may be, a provincial assembly may make laws. Okay, this is present in miscellaneous financial provisions. So this was about 164 article. Now let's move to 165 article of Constitution of Pakistan 1973. Exemption of certain public property from taxation. There is exemption for this. So article 1 of article 165, the federal government shall not, in respect of its property or income, be liable to taxation under any act of provincial assembly, and subject to class 2, a provincial government shall not, in respect of its property or income, be liable to taxation under act of Majlis-e-Shura, Parliament, or under act of the provincial assembly of any other province. Subarticle 2 of article 165. If a trade or business of any kind is carried on by or on behalf of the government of a province outside that province, that government may, in respect of any property used in connection with that trade or business, or any income arising from that trade or business, be taxed under the Act of Majlis-e-Shura, Parliament, or under Act of the Provincial Assembly of a province in which the trade or business is carried on. Subarticle 3 of Article 165. Nothing in this article shall prevent the imposition of fees for services rendered. So there is another article, 165A article of Constitution of Pakistan 1973. Power of Majlis-e-Shura, Parliament, to impose tax on the income of certain corporation etc. Subarticle 1 of Article 165A. For the removal of doubt, it is hereby declared that Majlis-e-Shura, Parliament has and shall be deemed always to have had the power to make the law to provide for the levy and recovery of a tax
on the income of a corporation, company, or other body or institution established by or under a federal law or a provincial law or an existing law, or a corporation, company, or other body or institution owned or controlled either directly or indirectly by the federal government or a provincial government, regardless of the ultimate destination of such income. Sub-article 2 of Article 165A. All order made, proceedings taken, and acts done by any authority or person which were made, taken, or done, or purported to have been made, taken, or done before the commencement of the Constitution Amendment Order 1985 in exercise of the powers derived from any law referred to in Clause 1, or an execution of any orders made by any authority in the exercise or purported exercise of powers is aforesaid, shall, notwithstanding any judgment of any court or tribunal, including the Supreme Court and a High Court, be deemed to be any and always to have been validity made, taken, or done, and shall not be called in question in any court, including the Supreme Court and a High Court, on any ground whatsoever. Sub-article 3 of Article 165A. Every judgment or order of any court or tribunal, including the Supreme Court and a High Court, which is repugnant to the provisions of Clause 1 or Clause 2, shall be deemed always to have been void and of no effect whatsoever. So it was about miscellaneous financial provisions, which was contained the Article 164 to 165A. It was this one. So hope so you understand, and whatever written in the textbook of Pakistan Constitution 1973, of course it is totally essential. Whatever I read it, whatever I explained, whatever I delivered, which is totally written in the textbook of the Constitution of Pakistan 1973. तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और एंजॉय कर रहे होंगे. अच्छा, एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, एड्रेस करना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को वक्त दें ना, उसको एंजॉय करके अपना वक्त देंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको बोर नहीं करेगी, वो चीज़ आपको तकलीफ नहीं देगी, वो चीज़ आपको समझ में आना लगने लगेगी. तो ऐसा अपना माइंड जो है सेट आउट कर लें. जब भी किसी चीज़ को वक्त दें, वॉट एवर जो भी चीज़ हो, जिसको भी आप वक्त दें, उस चीज़ में उस वक्त को आप एक जो है निखार दें. निखारने का मकसद होता है कि आप इंजॉय करें. वॉट एवर जो भी आप जो है स्टडी कर रहे हो, जो जिस चीज़ को वक्त दे रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस चीज़ में आप अगर इंजॉय करना पसंद करेंगे ना, वो काम आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब आपकी सोच भी नहीं होगी. तो ये जस्ट मेरा जो है सजेशन था, एड्रेस थी. बाकी एवरीवन हैज देयर ओन थिंकिंग. आई कैन नॉट चेंज द थिंकिंग ऑफ अदर्स. सो व्हाट पीपल थिंक, इट्स देयर ओन थिंकिंग. व्हाट यू थिंक, व्हाट यू एक्ट, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हाट इज बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर मी. सो डन सो, डू सो, क्रिएट सो, एंड आपके सामने मैं हाजिर हूँ. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. If you have any kind of the question, you may ask from me through the comment when I posted this video on my channel YouTube, and subscribe my channel. Of course, the essential knowledge of every law, slow and steady wins the race, as I have told you previously. तो आहिस्ता चलेंगे हम, पर ग्रेजुअली चलेंगे. और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ताला हम जो है बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.